Assalamu alaikum friends. I am your tax dost and tax host Anthony Williams and you are watching Tax Dosti reporting videos. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 7 नवंबर 2018 और जैसे आपको पता है कि हम आपको लेटेस्ट न्यूज़ जो टैक्स रिलेटेड होती है वो टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग पे दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि आपके टैक्स राइट्स पर क्या असर पड़ रहा है और कैसे आप जो है ना उसको मैनेज अपने टैक्स मामलात को कैसे मैनेज कर सकते हैं। So the purpose of Tax Dosti reporting videos is to help you make sense of the news with regard to your tax rights and how you can manage your tax affairs in Pakistan. आज जो हम खबर देख रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग इस तरह है कि जब मैंने टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियो स्टार्ट की तो मैंने कहा कि बेसिकली जो है क्या कहते हैं 4 ऐसे इदारे हैं जिन पर जो है क्या कहते हैं मैं वो करूँगा फोकस करूँगा और सुप्रीम कोर्ट 5वां जो है सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि ये जो 4 इदारे हैं इनका काम है कि आपके मेरे जो फाइनेंशियल यानी माली हालात हैं, माली चीज़ें हैं, माली कवानीन हैं, इन पर अप्लाई हो। तो ये जो रिपोर्ट है आज जो हम देख रहे हैं वो कहती है SC यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आस्क FIA से बनता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इस एजेंसी का काम है, एक पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि इसका काम है कि ये देखे कि जाली बैंक अकाउंट्स हो गए या लोग जो अगवा हो जाते हैं वो मुल्क के अंदर बाहर, या जो है साइबर क्राइम, या अगर आपको कोई फेसबुक पे तंग कर रहा है या कोई जाली डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, कोई जाली करेंसी बना रहा है, इस तरह के काम जो है ना FIA देखता है। और अभी साइबर अटैक्स वगैरह भी जो हुए हैं तो वो ये देख रहे हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है इनको FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से वक्तन फ़वक्तन जो है मुख्तलिफ अकाउंट्स के फोरेंसिक ऑडिट कराता रहता है। फोरेंसिक ऑडिट का मतलब ये होता है कि ना सिर्फ आप देखते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए या कहाँ गए, बल्कि फोरेंसिक अकाउंट्स में आप जो है देखते हैं कि वाकई में ये पैसे आए थे, ये चेक जाली तो नहीं है, ये जो करेंसी है ये जाली तो नहीं है, ये जो डॉक्यूमेंट बने ये जाली तो नहीं है, झूठ मूठ के तो नहीं बने हुए। तो FIA जो है ना इतनी तफसील में, फोरेंसिक का मतलब है कि उसका एक्सरे करना, उसको बुनियाद से देखना। सिर्फ अगर आपको कोई स्टैम्प पेपर पे कागज़ पे दिखा दे कि जी ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो चेक करना कि वो स्टैम्प पेपर सही बना था, वो स्टैम्प पेपर जिस कोड से या जिस बैंक से इशू हुआ है उस पर नंबर है, उस पर बार कोड है। तो फोरेंसिक ऑडिट का मतलब है कि उसको बड़ी डिटेल में चेक करना कि ये वाकई में ये कागज़ या करेंसी या ये चीज़ बात ठीक है कि नहीं। दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारे जो इदारे हैं इन पर हम वक्तन जो है ना टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस बनाते हैं और ये इदारे आपके टैक्स राइट्स को और आपके फाइनेंशियल आपकी वेल्थ को और आपकी इनकम को अफेक्ट करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम है एक तो ये कि मुल्क में जो नोट छापे जाते हैं, उसके अलावा जो सारा रिकॉर्ड है मुल्क में कितने लोग क्या काम करते हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में से तकरीबन 7 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो जॉब करते हैं या काम करते हैं, मतलब बिज़नेस करते हैं या खेतों में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं या फिर जॉब्स करते हैं। तो ये सब डेटा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रखता है और ख़ास तौर पे पैसे मुल्क से बाहर लाने और ले जाने के हवाले से स्टेट बैंक असूल बनाता है, जो इस वक्त ये असूल है कि $10,000 से ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते। उसके अलावा पिछले दिनों ये कानून भी बना कि जी आप अगर फाइलर नहीं हैं तो आप किसी बैंक में पाकिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना मॉनिटर कर रहा है और अगर कोई भी ऐसी माली मुश्किलात हो, प्रॉब्लम्स हो, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आप जो है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके अलावा फिर हमारा जाना पहचाना FBR है। FBR ज़ाहिर बात है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी जो आपका इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के जितने भी मामलात हैं। सेल्स टैक्स होता है वो उन लोगों के लिए जो कारोबार करते हैं, उनको रजिस्टर होना पड़ता है और जब वो अपनी इनवॉइस यानी कि बिल जारी करते हैं कस्टमर को, तो उसमें सेल्स टैक्स भी जमा करके 16% 17% जमा करके कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी खबरें ज़ाहिर बात है मेन इनकम टैक्स सेल्स टैक्स के हवाले से उनकी हम टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग में बताते हैं आपको। तो ये बेसिकली 3 इदारे हैं। एक चौथा इदारा जो है
وہ ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP. تو وہ بھی ان سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ جو کمپنی بنتی ہے یا پارٹنرشپ بنتی ہے وہ وہاں رجسٹر ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے, FIA کو بھی کہا ہے, اسٹیٹ بینک کو اور FBR کو, کہ وہ پاکستانی جن کی باہر ملکوں میں فورن پراپرٹی ہے اس کی تفصیل لائے. اور اس آرٹیکل کے اندر اس پہ بات کی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے اور چیف جسٹس ثاقب نثار نے خود کہا ہے. نومبر 1 کو انہوں نے رپورٹ دینی تھی, آج تو 7 تاریخ ہے, تو یہ خبر لگ گئی ہوگی. اور اس میں مختلف باتیں ہیں کہ جی 3570 پاکستانی ہیں جن کی پراپرٹی باہر ہے. اب یہ کیسے FIA کو پتہ چلا ہوگا؟ FIA نے پہلے تو نادرا سے رابطہ کیا ہوگا, نادرا سے لوگوں کی ڈیٹیل لی ہوگی کہ جی کون سے لوگ ہیں جن کے, پھر اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ دیکھے ہوں گے اور اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں آیا ہوگا کہ جی اتنے لوگوں نے اتنی پراپرٹی اگر خریدی تھی, پیسے باہر لے کے گئے تھے, ان کے نام. اس کے ساتھ FBR کے ساتھ چیک کیا ہوگا کہ جی ایسے لوگ ہیں, تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ نہیں جی ایسے لوگ ہمارے پاس, تو جو انہوں نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کی ایسے لوگوں نے, یہ 3570 پاکستانیوں نے, انہوں نے وہاں فورن ایسٹس کا نہیں دکھایا. دوسری ایک اور بات آپ سمجھ لیں کہ ایک جو ہے, اب آپ کو پاکستانی شہری کے ہوتے ہوئے, ریزیڈنٹ پاکستانی ہوتے ہوئے, آپ کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرنی ہے اگلے سال جون 2019 کے بعد. آپ کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی فائل کرنی ہے جس میں آپ نے اپنے اثاثے بتانے ہیں اور اپنی سورس آف انکم لوکل بتانی ہے کہ پاکستان سے کیا کمایا اور پاکستان میں کیا. اور اگر آپ $10,000 سالانہ سے زیادہ کما رہے ہیں, باہر ملک سے آ رہے ہیں آپ کے پاس, تو جو ہے کہ کہتے ہیں آپ نے باہر کی آمدنی کا بھی آپ نے ڈیٹیلز دینی ہے. تو اس طریقے سے ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے, لیکن ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ ہم آپ کو ان سارے اداروں کا, جن کا آج کل فوکس ہے کہ ایسے پیسے جن پہ ٹیکس نہیں دیا گیا, جس سے گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ٹیکس نہیں مل رہا, اس پر توجہ دی جائے. اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں, چاہے وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں یا ان کے کنسلٹنٹ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, لائرز, ایڈوکیٹ, ان لوگوں پہ بھی نظر رکھی جائے اور ان کو وارننگ دی جائے. اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب اس میں پرسنل یعنی پروفیشنل دلچسپی لے رہے ہیں کہ یہ سب معاملات ٹھیک ہو جائے. قانون موجود ہے پیسوں کو روکنے کے لیے, لیکن ان پہ عمل درآمد اب ہو رہا ہے. تو امید ہے کہ آپ ٹیکس دوستی رپورٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے. ہمارے taxdosti.com پیج کے اوپر بھی بلاگ ہے جو ہمارا, یوٹیوب چینل ٹیکس دوستی کا, فیس بک پیج ٹیکس دوستی کا, اس کے علاوہ ٹویٹر اکاؤنٹس اور سوشل اکاؤنٹس بھی. آج میں نے ٹیکس دوستی کے اکاؤنٹ کے ویب سائٹ سے نہیں اسٹارٹ کیا, میں نے کہا آج دا نیوز کے پیج سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سو بیسکلی دس نیوز از اباؤٹ Supreme Court asked the Federal Investigation Agency FIA and the State Bank of Pakistan and the Federal Board of Revenue FBR to submit details of those Pakistanis who own property outside. Now the point we are making is that Tax Dosti reporting is focusing on giving you news and updates about these 4 institutions. First is FIA, SBP, FBR, and the fourth one is the Security Exchange Commission of Pakistan, SECP, which is not mentioned in this article. But these 4 regulatory law enforcement agencies are basically concerned with your finances, with your tax matters, with foreign currency accounts, with foreign inflows and outflows of money in and out of Pakistan, as well as money laundering and other stuff. So along with these 4 institutions, we also keep an eye for news about Supreme Court, especially if Supreme Court, like in this case, has directed these agencies to do something, and that is to find out about those Pakistani, which this report and the FIA claims that there are about 3,570 Pakistanis who have not declared their foreign assets in their local wealth statement and income tax returns. So now, starting from 2000 and after June 2019, that is tax year 2019, you will have to file your income tax return and your wealth statement, declaring all your incomes earned in Pakistan and all your assets in Pakistan. And if you have income more than $10,000 in a year coming from abroad, then you have to separately file, along with these 2 statements,
a third statement called the statement of foreign income and assets, where you will have to show your foreign incomes and your foreign assets, reconcile them accordingly, and you will have to declare them, because FIA and FBR and SCCP and State Bank is now giving details or sharing details amongst themselves, so that they know that you have assets outside of Pakistan. So it is very important, and if you don't declare, then you will have to pay every year 2% of your penalty as on your assets for those assets that are undeclared. So I hope Tax Dosti reporting has helped you in understanding everyday news, your tax returns, your requirements by the tax authorities, and you'll keep watching our videos on taxdosti.com, that is TAXDOSTI, taxdosti.com, or on YouTube channel of Tax Dosti or Facebook page of Tax Dosti or other websites. Normally I start with the Tax Dosti page, but I said today we'll start with the news page, but you can visit it to see our blog and our tax masterclass as well as our other features. Thank you very much. I'm your tax dost and tax host, Anthony Williams.